Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed some fundamental properties, fundamental parameters for measurement. Those parameters were mass, density, volume, temperature, right? And this is how temperature is being measured: Kelvin scale, degree centigrade scale and degree Fahrenheit scale. तो अगर आपको कोई एक पैरामीटर गिवन है, सपोज करो आपको डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू गिवन है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में, या फिर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो जस्ट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, जिसको आप ऐसे भी कर सकते हो C/5 इज इक्वल टू F-32/9. ओके, अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क में. होमवर्क आपका ये है, ऐसा कौन सा विच टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर व्हेन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको काउंट करना है. ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इक्वल होगा, राइट? ये आपको होमवर्क में करना होगा. आगे देखते हैं पैरामीटर्स. Or 5 Celsius degrees equals 9 Fahrenheit degrees. We have learnt that chemistry deals with matter. And matter is made up of atoms and molecules which have extremely low masses and are present in very large numbers. Thus, chemists have to deal not only with a large number of atoms and molecules, but also with calculations containing large numbers. For example, Avogadro number is such a big number that there are 20 zeros after 6022. It is not only inconvenient to write such a large number, but also difficult to perform mathematical operations. देखिए, अवोगाद्रो नंबर बेसिकली केमिस्ट्री में इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जब केमिकल काउंट किए जाते हैं, या यूँ कह लें केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस किए जाते हैं, तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, करेक्ट? तो माइन्यूट क्वांटिटी काउंट करने के लिए एक सीधे सीधे नंबर स्टैब्लिश किया गया जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, अवोगाद्रो. तो अवोगाद्रो ने बोला कि जब भी कोई केमिस्ट्री में नंबर काउंट किया जाए, क्योंकि आप हवा का एक छोटा सा पार्टिकल भी लेंगे, हवा में एक छोटा सा 1 ml को काउंट करेंगे कि इसमें कितने पार्टिकल हैं गैस के, तो कितने आएंगे? आप कहोगे इतने आएंगे, क्योंकि वहाँ तो बहुत हो जाएंगे. तो ये एक डिफाइंड वैल्यू निकाली गई है बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन करने के लिए केमिस्ट्री में, जिसको नाम दिया गया अवोगाद्रो नंबर, करेक्ट? अवोगाद्रो नंबर जिन्होंने बोला वो कितना है, इन्होंने लिखा है 6022, आगे 20 जीरो लगा दिए हैं. एक्चुअल में इसको लिखा जाता है 6.022 इंटू 10⁻23. ये पूरा काउंट होता है. क्यों किया जाता है, जरा हम इसको देखेंगे पहले एनिमेशन में, फिर हम डिस्कस करेंगे अवोगाद्रो नंबर के लिए. Like addition, subtraction, multiplication, or division with such a number. To overcome this problem, chemists started writing large numbers using scientific notation, जिसको पावर्स, also known as exponential notation. In scientific notation, any number can be represented as n multiplied by 10 to the power of n, where lowercase n is an exponent having positive or negative values, and uppercase n is a coefficient that can vary between 1 and 10. Thus, we can write Avogadro number in the exponential form as 6.022 multiplied by 10 raised to the power of 23. Similarly, the number 0.0493604 is written as 4.93604 multiplied by 10 raised to the power of -2. Here, we have to move the decimal point 2 places to the right. Hence, we can say that the exponent is -2 and the coefficient is 4.93604. Now let's see how to perform mathematical calculations on numbers written in scientific notation. Let's start with addition and subtraction. If we have to add or subtract any number expressed in scientific notations,
we must first check if the exponent of the numbers is the same. Only if they are same, we can add or subtract the coefficients. For example, in this equation, one exponent is 4 and the other is 3. Therefore, in order to add the numbers, first we have to make the exponents same. As 6.62 has the larger exponent, that is 4, we have to convert the exponent of 4.31 to match the larger exponent. So, we rewrite 4.31 multiplied by 10 raised to 3 as 0.431 multiplied by 10 raised to 4. Now, after taking the exponential factor in common, we add both the coefficients and obtain the result as 7.051 multiplied by 10 raised to the power of 4. The same rule applies to subtraction. The example shown here illustrates the steps to subtract two numbers. Now let's see how to multiply and divide numbers written in scientific notations. To multiply two numbers, first we add the exponents and then multiply the coefficients. For example, to multiply 2.4 multiplied by 10 raised to the power of 3 with 5.6 multiplied by 10 raised to 4. First, add the exponents and then multiply the coefficients as shown. To divide two numbers, first subtract the exponents and then divide the coefficients. Here's an illustration of dividing numbers written in scientific notations. When performing experiments, we often perform mathematical calculations on quantitative measurements to obtain accurate results. People often use the terms accuracy and precision interchangeably. दो टर्म यूज़ करेंगे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. एक्यूरेसी केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यही रीज़न है कि किसी चीज़ों को हमें जनरली सुनने को मिलता है, नकली दवा हो गई, कोई असली दवा हो गई है. तो नकली दवा क्या है? क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है, राइट. याद रखें, अगर हम कोई मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें मान लो ए, बी और सी, ये तीन हमारे पास सॉल्ट हैं. इनका एक प्रॉपर मिक्सचर है 1:2:4. सपोज ये एक हमने एक मिक्सचर ले लिया, इसको मान लिया 1:2:3 ले लिया, राइट. अब ये एक एक्चुअल प्रपोजिशन है, एक एक्चुअल प्रपोर्शन है 3 सॉल्ट का, राइट. तो जिसको हम बोलते हैं नहीं चीज़ें नकली दवा बन गई, तो एक्चुअली क्या है, प्रपोर्शन में प्रॉब्लम हो जाती है. यानी कि आपके सॉल्ट तो सही थे, ए और बी और सी तो सही था, लेकिन प्रपोर्शन ये 1.5 हो गया, राइट, ये 2 हो गया और ये 3.1 हो गया. तो डिफरेंस हो गया ना. यानी कि प्रपोर्शन में दिक्कत आ जाए, यानी प्रपोर्शन एक्यूरेट ना हो, तो क्या बन जाता है, वो चीज़ें नकली दवा कहलाती हैं. तो ये रीज़न है कि क्यों फॉल्स मेडिसिन आपके मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि प्रपोर्शंस में प्रॉब्लम हो जाती है. एग्जैक्टली वो एक्यूरेसी नहीं काउंट कर पाते. तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दो टर्म, अलग अलग टर्म यूज़ किए जाते हैं अलग अलग फैक्टर्स में. देखें पहले. But are accuracy and precision the same? Let's see. If we have few grains of rice scattered in the plate, we can easily count them and say that they are 20 in number. However, what if we were asked to count the rice grains in this bowl? We would count them, but due to the large quantity, we may not be able to confirm if our count is accurate. One way of ascertaining the accuracy of measurement is to repeat it. Let's assume that we know that there are 105 grains in the bowl. Thus, the correct value of measurement is 105. Now, let's say we ask 4 people to count the grains, each 5 times. Shown here is the data of each person. देखें, एक बाउल में कितने राइस के
पार्टिकल्स हैं या कितने राइस के ग्रेन्स हैं, उसको काउंट करने के लिए हमने 4 लोग लगाए। और याद रखिए हमने 4 लोगों को 5 बार काउंट करने के लिए बोला, राइट? पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, इन्होंने 5 बार अलग अलग काउंट किया और सबके देखो एक्यूरेट नहीं रहा किसी का। उसका रीज़न है, अब यहाँ पे एक प्रिसीजन लिया जाएगा, देखें कैसे। We know that the correct value is 105. If the average value of one of the measurements is close to the correct value, then that measurement is said to be accurate. If the values of measurements are close to each other, and hence close to their average value, then the measurement is said to be precise. Correct. Let's look at the data to understand what it shows us. For person A, the average value matches the correct value. Also, the values of different measurements are close to each other. Hence, we can say that A's data is accurate and precise. For person B, the average value is not close to the correct value, but the values of different measurements are close to each other. Hence, B's data is not accurate, but it is precise. For person C, the average value matches the correct value, but there is a variation between the values of different measurements. So, C's data is accurate, but not precise. Note that accuracy without precision could be a matter of chance. Note the points. For person D, the average value does not match the correct value. Neither are the values of different measurements close to each other. So, D's data is neither accurate nor precise. The certainty and uncertainty. In next term, we will discuss what are the significant figures